So very good afternoon to everyone and thank you for joining us for the 13th fortnightly session organized by Knowledge and Awareness Mapping Platform. I, Arika Mathur, convener of CAMP, will moderate this session today. So today we have with us Dr. Charulata, Senior Scientist CSIR NISPER. We have with us Mr. Ashish Kumar Mittal, Project Director CAMP, Mr. Amit Shukla, Head Capacity Building Group, and my fellow Campions. I welcome you all. Knowledge and Awareness Mapping Platform is an initiative and knowledge alliance of CSIR NISPER, that is National Institute of Science, Communication and Policy Research, Ministry of Science and Technology, with industrial partner NCPL, NISA Communications Private Limited. CAM believes every student is blessed with a core talent and aims to bring out the best in them through this platform. CAMP organized its first scientific excursion at CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology, IGIB, New Delhi on 8th of September 2022, with more than 150 participants, including student parents and teachers, who witnessed the zebrafish facility, transmission electron microscopy, and scanning electron microscope. CAMP is further organizing many other excursions in the coming months, which will be announced soon. So CAMP is back with the 13th fortnightly knowledge sharing session for the year 2022 on our heritage, Indian traditional knowledge. Our heritage. How many of us genuinely understand the value of our country's traditional knowledge? It is true that the awareness of our glorious heritage can shape a better future. So this workshop is for the students of our nation to understand and value the heritage that we possess. Before we go ahead and invite our special guest, please do not forget to give your feedback about this workshop at the end of the session so that we can keep improving our content. The feedback form can be shared in the form of a video or in the form of a Google form, which will be shared at the end of the session in the chat box. Also, you can share your question and answers in the chat box, which will be taken up after the session. Now I invite Dr. Charulata, Senior Scientist and Head of the Inclusive Health and Traditional Knowledge Studies Division at CSIR NISPER, New Delhi. She's the editor of the Indian Journal of Traditional Knowledge and Indian Science Abstract. Dr. Lata is leading the national initiative Swastik on communicating India's scientifically validated traditional knowledge to the society. She is a recipient of many prestigious top honors for young scientists in India, including Young Scientist Award by INSA and NASI in 2012, Associate of the Indian National Academy of Sciences. She has also been awarded with various prestigious awards and has authored more than 60 original research and review articles and book chapters in various peer-reviewed high-impact SCI journals and books. So now I request ma'am to kindly address the gathering. Thank you, Arika, for such a nice introduction. And I'm really, excited to connect with all the young children out there. Because I have done a lot of outreach earlier, but mostly connected with students from 9th onwards, like 9 to 12. But I think it's the first time that I am interacting with so many students from 5th standard onwards. So I've tried to keep my presentation simple. And I would be conversing both in Hindi and English, just to make it more, it should to make it more interactive. And I hope the chat box is they can type their comments and other things in the chat box. Yeah. So now I'll be sharing my presentation. Share my screen. And I will be also sharing, if time permits, 1 or 2 small videos. Okay, after my presentation ends. So I think it's slide is visible, right? Yes, ma'am, it's visible. Yeah. So yeah. So I have chosen this topic, first of all, because 2 things. I'm from the Traditional Knowledge Studies Division. Another, I'm also working very closely with the national initiative Swastik, which aims to communicate the scientifically validated traditional knowledge of India to the society.
through various, attractive infographics and audiovisual means. So what is the necessity to, again, like it's a hot topic nowadays that everyone is talking about traditional knowledge of India and the need to protect it, perpetuate it, conserve it. So what is the need for this? So I thought that I should take this particular session on this topic. So just before I started, just ask a few, like just a quick quiz to the students. I think the two images are visible on my screen, on your screen also. So can you identify them? And if anyone can identify them and write their names. Ma'am, the slide is not moving ahead. Not moving? No. It's moving. I can still see the first page of the slide. First only? Yeah, ma'am. How come? Because, okay, let me stop sharing and again. Now it's okay. Okay. Let me share it again. Okay. Perfectly visible, ma'am. Now it's visible? Okay. So yes, so can you identify them? Anyone? Abhi Mazumdar has raised hand. So the first picture is so in the chat box is there Isaac Newton and Galileo. Okay, perfect. So yes, so students are identifying the mathematician and astronomer and physicist from the Western world. Now another slide. I don't know what happened. Okay, sorry. Yeah. So now any guesses? Any guesses on the photo shared now? Okay. Aryabhatta and Shushruta. Okay, wow. So someone has written Aryabhatta and Shushruta. Daksha Jain. Oh, very nice. Perfect. So yes. So first one is Aryabhatta. So and another is Shushruta. So someone is writing Charaka also. So anyway, so I'm very happy that students are also like identifying our scholars from ancient India. So that's very, very nice. तो क्या है कि ये जो हमारे ग्रेट स्कॉलर्स हैं आर्यभट्टा, तो इन्होंने जो है जो वैल्यू ऑफ पाई आप कहते हैं, ये जो है लोगों को बताया 5th सेंचुरी 499 AD में इन्होंने जो है ये बताई कि पाई की वैल्यू इज लाइक विद अ वेरी क्लोजेस्ट कैलकुलेशन ही गेव लाइक 3.1416, जो अभी आपका जो वैल्यू है इट्स लाइक 3.1415. सो द क्लोजेस्ट वैल्यू ही गेव. सुश्रुता वाज द फादर, इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी. तो ये जो चीज है ये हमारा ग्लोरियस हेरिटेज है, और इसलिए जो है वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न अबाउट our heritage and try to give importance to our heritage. So then comes the importance of our Indian traditional heritage here. I don't know, I'm facing some issues with moving my slides. Yeah, so starting my presentation now. So if we want to learn about Indian traditional knowledge, let's start with the very basis of it, like how our traditional knowledge has shaped up. So that shaping up has started was conceptualized or initiated with the flourishing of our civilization. So a lot of civilizations occurred in the world: the Greek, Sumeru, Ilkha, Mayan civilizations. But the ones which thrived in the Indian subcontinent were the Indus Valley civilization, and then the Sindhu-Saraswati civilization also, which is known as the Vedic civilization. So this Indus Valley civilization actually is better known as the Harappan civilization, and this is the remnants of Mohenjo-daro.
So it thrived on the banks of Indus River, developed on the fertile plains, while the Sindhu-Sravasti civilization or the Vedic civilization, it developed on the Indo-Gangetic plain. And this civilization actually formed the very basis of Indian knowledge system, because this civilization is known to be associated with the Vedas. So four major Vedas, the Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharveda, are considered to be, created during this period. Some of the major religions of the world originated during this period. Epics like Ramayana and Mahabharata were written. And this civilization, it has survived over time, the migration and invasion and everything. And why it was so? Because what we think is that the knowledge system. The knowledge system is a very important component of any civilization, which helps it to thrive and sustain through centuries. So Indian knowledge system was created and acquired by the Indians over thousands of years in this subcontinent itself. And it is the systematic transfer of knowledge from generation to generation. Okay, it's a very structured process. It's a very structured system and process of knowledge transfer. And our knowledge system, or our knowledge, is basically like we can categorize this repository into two broad classes: the systematized knowledge, that is in the form of the manuscripts and the shastras or the Vedas, Upanishads, whatever the classical texts or books are there. So through that, there is one repository is there, and another repository is through oral traditions or folk songs, through stories and arts and handicrafts and traditional skills. So so the latter one is basically not documented in a proper or systematized way. So this Indian knowledge system is actually is the most holistic and human knowledge system, because it has the Indians have developed it through practice, verified and improved it over thousands of years, and it is formed on the very basis of well-being of all. These are some of the shlokas that you might have read most of the time, or at least heard several times, that Sarve Bhavantu Shukhina, Sarve Shantu Niramaya, or Vasudev Kutumbakam, or Ekam Shat Vipra Bahuda Vadanti. So so these shloks, like these basically emphasize that we think we are not selfish in nature, like we think about the well-being of the society and the world as a whole. ठीक है, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, या पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, एक घर है, और या सत्य एक ही है, द ईश्वर इज वन, हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, और ये जो फिलॉसफी हमारी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से है, उसको लोग अब मान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. So therefore Indian knowledge system is so diverse and deep rooted, and that's why our tradition or our traditional knowledge has also thrived over centuries. तो ये जो traditional knowledge है, it is not only in the form of art or music or dance forms or culture only, but in various science and technology domains. We had a rich repository. I'm just enlisted some of the subject areas in which we had a huge repository of knowledge, like astronomy, mathematics, chemistry, physics, agriculture, town planning, water management, metallurgy, education. So every in all of the aspects, we have very I would say a very diverse and very robust knowledge system. From the next slide onwards, I would like to pick some of the subject areas mentioned here, and then I would like to give one or two examples to make you understand
about our traditional knowledge. So I will start with the education and philosophy, because we all students are here. So they should be knowing about our education system. So how important was education in ancient India? So if this is the question, then we say that it was very, education was given utmost importance in our ancient society. It was considered as a holy work. Teachers were given utmost respect. Even, the respect was far, even आप जैसे कहते हैं कि भगवान से भी ऊपर हमने गुरु को माना है. एक श्लोक मुझे फिर से याद आ रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो ये जो है ये बताता है कि हमने जो है टीचर्स को, जो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनको हमने क्या स्थान दिया हुआ है, और जो है टीचिंग और टीचर्स हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं. So education at that time, since that time, it was meant for gaining knowledge, for character development, gaining self-control and confidence, understanding social issues. It was not only like कि आपको कुछ एक स्किल मिल जाए और आप जैसे आजकल ऐसे है कि आपको ये स्किल डेवलप कर ले रहे हैं, and then you will ताकि you can earn your bread and butter and all. But at that time, the education focused on overall holistic development of the children. तो नॉलेज भी चाहिए आपको, स्किल्स भी देंगे, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाना है, आपका जो कैरेक्टर है वो कैसे बिल्डअप होगा. सो ऑल दीज थिंग्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट. So ancient education system were mainly based on various classical texts like Vedas and Upanishads and various sutras and shastras, and physical education and even warfare, archery. So all these formed a very important part of the curriculum. And most importantly, the Gurukula system, जो आजकल का modern day boarding school का concept है. So it was was part and parcel of our education system. So Gurukula system also played a very important role in education, because it focused on the idea that the student that were called Shishya, so they should learn in the natural environment along with their peers, along with their other students, with brotherhood and humanity and love and discipline. So the one who studied in Gurukula was thought to be very disciplined and organized. आज भी आजकल की जैसे अगर आप घर पे ज्यादा शैतानी करेंगे तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि आपको बोर्डिंग में डाल देंगे अगर आप ज्यादा शैतानी करोगे, वहां पे आपको थोड़ी सी डिसिप्लिन आ जाएगी. सो ये इसलिए है क्योंकि वहां पर आप बोर्डिंग स्कूल में आप और लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन में रहना आता है, आपको शेयरिंग करना आता है, और आप काफी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं लाइफ में. तो द सेम थॉट प्रोसेस वाज देयर, एंड दिस वाज लाइक फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. Now that was already a part and parcel. अगर हम ये गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं तो उस समय जो भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज थे, मैं दो एग्जांपल्स बताऊंगी यहाँ पे, तक्षशिला का और एक और है जो नालंदा यूनिवर्सिटी. तो दिस वर ऑल गुरुकुला पद्धति पे थे, वहां पे स्टूडेंट्स जाकर के रहते थे. इनफैक्ट एट टाइम्स इट इज सेड दैट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक समय में तक्षशिला में पढ़ाई करते थे. सो इट वाज सच अ रॉबस्ट एंड बिग यूनिवर्सिटी सिस्टम वाज थ्राइविंग. 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, and it was a center for higher education learning, like ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science, arts. और कुछ जो लेजेंडरी इंडियंस जो तक्षशिला में जिन्होंने पढ़ाई करी, पाणिनि, जो संस्कृत ग्रामर जो है बेसिकली like he is basically the father of Sanskrit grammar, you can say. Then Jivaka, he's the renowned physician. Then Chanakya, the renowned economist and skilled exponent of statecraft. So ये लोग जो है इन लोगों ने तक्षशिला से रह करके पढ़ाई करी थी. तो we have very famous universities. Then another example is of the Nalanda University, which was again a center for higher learning, and it's presently located in Rajgir, Bihar. So it is again one of the oldest universities of the world and known for studies on Vedas and fine arts, medicine, mathematics, astronomy, politics, warfare, etc. So
तो इन दो एग्जाम्पल से हमें ये समझना चाहिए कि हाउ यू नो how strong our Indian knowledge system was, and no the ignorance, और हमने उनको जो है thrive नहीं होने दिया, कि अब like the Western education जो है वो हम now we are following the Western education, but NEP is again trying to inculcate the Indian traditional knowledge systems into the courses now. Then mathematics and astronomy, I'd also like to give two examples from this area also. जैसे mathematics and astronomy में we had great scholars. Some of them are like Brahmagupta, Bhaskaracharya, Varahamira, Aryabhatta. और जो हमारी जो heritage है mathematics and astronomy से, like we have the concept of zero as a number, geometry, value of pi, binomial theorem, trigonometry, orbital periods है ना, sun, moon, और planets का orbital period, diameter celestial bodies की, number of years calculate करना on the basis of the distance of the celestial bodies. तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे great scholars ने काफी पहले जो है document किया हुआ है. तो इसमें Aryabhatta, so he was a legendary Indian mathematician, and he authored a compendium on mathematics and astronomy which is called Aryabhatiya. और जो आजकल जैसे आप जो triangle और circle and trapeziums के जो area के formulas आप देखते हैं, तो ये सारी जो formulas हैं is given in shlokas. 1 or 2 line shlokas में he has given all these things, and all these are mentioned in his compendium. Then alphabetical scheme for expressing numbers, extraction of square roots, cube roots, sine tables, or जो pi की value that I already told, that he worked out the value of pi in the form of sloka in 499 AD itself. And he also proposed that Earth rotates on its axis, and proposed how eclipses happen. So this is about Aryabhatta. And then we have another, like I'm giving another example of another legendary mathematician is Brahmagupta, who defined the properties of the number zero. He discovered the formula to solve various equations, and established the rules to work with positive and negative numbers. And his most famous result in geometry is his formula for cyclic quadrilateral, and he also calculated the length of a year. Similar to these two legends that I have mentioned, Aryabhatta and Brahmagupta, there are other classical legendary mathematicians and astronomers, and even we have और ऐसा नहीं है कि सिर्फ only the male counterparts were there. We had Leelavati also, which was a renowned mathematician. So we had a great legacy, a great heritage in this subject domain. फिर एक मेटलर्जी आता है जो मेटल क्राफ्ट है बेसिकली. तो मेटल क्राफ्ट जैसे आप सब लोग आई एम श्योर ज्यादातर लोग दिल्ली गए होंगे, दिल्ली से हैं या दिल्ली गए होंगे, और दिल्ली आते हैं तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इज अ मस्ट टू विजिट. और वहां पर यू हैव सीन दिस आयरन पिलर ऑल्सो, जो अशोका का स्तंभ है, और इसको जो है वी कॉल इट द रस्टलेस वंडर, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है. एंड दिस इज रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, and it dates back to period 375 to 415 CE or AD. तो वेरी रिसेंट स्टडी जो है वो एक अगारिया इज अ ट्राइब जो कि आपका मेटलर्जी करते हैं, रसलेस आयरन बनाने के लिए नोन है, एंड दे ड्वेल इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. सो दे आर वेरी वेल नोन फॉर द आयरन मेकिंग स्किल्स. और एक रिसेंट स्टडी हुई है कि हाउ दिस अगारियाज मेक हाउ दिस कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी आयरन मेकिंग स्किल्स में है. तो सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो आज के जमाने में हम क्यों ऐसा कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं मेटल का कोई भी चीज जिसमें जंग नहीं लगे. और ये चीज जो है हमारे एंशिएंट क्राफ्ट्समैन के पास ये स्किल इट वाज देयर काफी लाइक 400 AD में ही ये स्किल थी कि भाई ये जो है हमने रसलेस
मेटल पिलर और इतना बड़ा और इतना भारी वो बनाया और वो अभी तक इट्स स्टैंडिंग. तो we should be definitely proud of our heritage in metallurgy. Another example I'm giving you is Aranmula Valakanandi, which is handicrafted, metal mirror. So now this metal mirror is again, is very, it's confined to a community that thrives in like in a small village called Aranmula in Kerala. तो ये is a part and parcel of their culture, है ना. Like it's given to the brides also during their wedding and other things. But जो most important thing है कि ये जो हैंड हेल्ड मेटल मिरर है, ये शीशे का नहीं है, ये आपका बिल्कुल लोहे का बना है. और ये जो मेटल मिरर्स हैं, दिस आर मेड अप ऑफ कॉपर टीन एलॉय का ये बना हो रहा है. और इसका जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, दिस आर मच मच बेटर देन द मॉडर्न डे ग्लास मिरर्स जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं. तो इसका रीजन ये है कि ये एक जो है पॉइंट इमेज परफेक्ट बनाता है, जो हमारे ग्लास मिरर्स में परफेक्ट पॉइंट इमेज नहीं आती है. तो ये जो एक हैंडीक्राफ्ट है, which is confined to a very small section of small area of Kerala, so that also needs protection and conservation. Then in the field of architecture, I will be again giving you two examples. Just one is the Ramappa temple, which is the UNESCO World Heritage site, which has been declared, or it was built in 13th century in the reign of Kakatiyas. और इसका जो मेन फीचर्स हैं या मेन जो USPs you can say, like it is built up on a sandbox foundation. Floating bricks have been used. The materials which were used to construct this temple, so all these have helped this temple to survive several earthquakes since 13th century. और ये structure उतना ही intact है, and such a the marvelous work of architecture that the UNESCO has recognized and it given its due importance, and in the form of by declaring it as a UNESCO World Heritage Site. तो ये जो floating bricks हैं, लेकिन they can float on water, as you can see here in this image. So these bricks were presumably composed of tank silk combined with rice husk, jute, and organic resins, then burned to achieve high porosity and low permeability, giving them a sponge-like structure. So the architecture of this temple is earthquake resistant, and it has survived over 800 years from the time it is built. Then another example I would like to give you is Chhaya Someshwara temple, which is located in Telangana. So and was built around 11th century AD. At the time of Cholas. So the most peculiar characteristic, or why it's very important, or why pilgrims are so attracted towards this temple, is that you can see a shadow that is constantly this shadow is there on the Shivling. Okay, so now it is ऐसे सोचते हैं कि भाई ये जो है ये किसी एक पिलर का शेडो है, बट ऐसा नहीं है. लाइक पिलर्स इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं कि जो ये सारी लाइट्स लाइक इट इज अ कंबाइंड शेडो ऑफ ऑल द पिलर्स व्हिच आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड. So throughout the day, तो ये शेडो जो है ये throughout the day रहती है. आपका सन का मूवमेंट कुछ भी हो जाए, this pillar shadow remains the same. So this is again an excellent example of Indian architecture. और ऐसे जो है like I have just given you two examples, the numerous examples of Indian architecture that we are having in our country. Then comes the field of medicine. तो मेडिसिन में क्या है कि काफी सारा घर पर जैसे तबीयत खराब है या चोट लग रही है, तो मम्मा आपको हल्दी का दूध में हल्दी डाल के पिला रहे हैं, या फिर उसका हल्दी का कभी बैंडेज भी कर रहे हैं. तो ये जो है लाइक टर्मरिक हैज बीन लाइक is a traditional heritage. Use of turmeric as a home remedy is a traditional heritage of our country, because
it is a wonder drug for life. It is and इसमें काफी सारे जो properties हैं, lot of scientists and lot of researchers have worked on the various therapeutic effects of turmeric. Antimicrobial property, anti-inflammatory property, antioxidant, anti-carcinogenic, cardioprotective, hepatoprotective properties are there. So you can understand that our ancestors already knew the therapeutic uses of turmeric, and they were using it as home remedy and also in different medicines in Ayurveda. So Ayurveda, I'll be talking about that later. Then honey is also a very a common home remedy, or that we are all always using on daily basis. सर्दी है, जुकाम है, तो आप हनी लेते हैं जिंजर के साथ. तो major constituents of honey are water, sugar, amino acids, vitamins, minerals, and enzymes. And again, we have lot of honey also possesses lot of properties which are very beneficial to human health. So and again, honey forms the active ingredient for many of the traditional medicines. इसके अलावा like black pepper or dried ginger, tulsi, nutmeg, clove, तो ये सारे जो हैं, these are like time and again are being used. Like हम इसको use करते ही हैं. Like our traditional knowledge is so rich that almost every Indian household knows about their therapeutic potentials, and we're using. Right. तो इस पे किसी का copyright, इस traditional knowledge पे किसी का copyright नहीं. तो this is there. Then जैसे garlic है, coconut oil, castor oil. So all these all the therapeutic potentials of all these herbal medications we are already knowing. Now if we talk about the concept of Ayurveda or yoga, because हमारे Indian medicine systems which is currently known as Ayush, the Indian medicinal systems is Ayush, that is Ayurveda, Unani, yoga, and Siddha, and homeopathy. So these are our 5 Ayush mode है medicines के, जो हमारे Indian traditional medicine system को belong कर रहे हैं. But Ayurveda and yoga जो है is like its lineage is like deep rooted in our culture. So Ayurveda is one of the oldest healing sciences, which means the science of life, and it was originated in India more than 5,000 years ago. And it is a systematic approach to heal the person on the basis of the Tridosha concept. And we have great Vaidyas like Acharya Charaka or Acharya Shushruta. So Acharya Shushruta was the father of surgery. तो उन्होंने विश्रुत संहिता लिखी, और उसमें काफी सारे जो है medical procedures and surgical procedures were mentioned. Then yoga is again our heritage, because it's a group of physical, mental, and spiritual well-being or disciplines which originated in ancient India. And some of the health benefits of yoga, like if you practice yoga daily, you're supposed to lower the stress, anxiety, fatigue, depression, any pain or disease severity also. So yoga is also again a holistic package for a healthy life. So and this Ayurveda and yoga again like is our like marvelous heritage. Then comes to let's say foods and beverages. So again 2 examples I'll give here. This is a platter. This is an Onam Sadhya platter where you can find different food items are there and which are eaten on the occasion of Onam. So again, our ancestors know the importance of complete and balanced diet. By this, I want to sensitize you that our ancestors knew the importance of complete and balanced and healthy meal, and like it was served on banana leaf, and you need to sit on the floor and eat it with your hands. तो ये सब चीजें करने से भी काफी health benefits हैं. तो and sadhya is consists of usually 12 to 26 dishes. तो इतना जो है wide variety और आपका पूरा एक बैलेंस जो है वो डाइट का होता है. तो एंड इज अ ट्रेडिशनल फूड.
So we should understand the importance of again our heritage and traditional foods also. Another thing is like another example I'm giving you is boita ghat, which is like a fermented rice from the northeast part of our country, where the rice is left for fermentation overnight at room temperature by adding the adequate amount of water, and next day morning it is being consumed. तो इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन डन, और कि व्हाई इसका इतना हेल्थ बेनिफिट्स है. हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूड लाइक इट एक्ट्स द बॉडी कूलेंट, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, इट मेंटेन्स healthy intestine, prevents gastrointestinal ailments, and has sleep inducing effects also. So the studies have shown the role of various fermenting bacteria, and also other nutrients are also available, जो कि fermentation के time पे जो entry nutrients हैं वो भी degrade हो जाते हैं. तो all these help you in maintaining a good health. So this is there. Then one example I'm just giving from a beverage point of view, like Kashmiri Kahwa is a traditional beverage from Kashmir, which is basically a green tea and is a mixture of green tea, saffron, cardamom, pepper, and cinnamon and almond, and it's very rich in antioxidants, and it improves metabolism and digestion, and this has been proved by various scientific research that has been conducted. तो अब जो है लाइक लॉट ऑफ इंटरेस्ट जो है आ रहा है, लोग जो है वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जैसे कहवा जो है ठंड इतनी होती है हमारे नॉर्थर्न पार्ट में, तो लोग अपने आप को उनकी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए, कहवा इज लाइक अमृत, लाइक दे ड्रिंक ऑन डेली बेसिस. तो ये जो है नाउ अब साइंटिफिकली भी इट हैज बीन प्रूवन दैट व्हाई इट इज हैपनिंग. Then another example I'll give you from the agriculture, where like India is a land, is a hub of several indigenous rice varieties, और ये जो rice varieties हैं, these are like locally suitable to thrive in the environment. So the modern agricultural practices and introduction of hybrid seeds or varieties have resulted in the loss of these varieties, but we should be protecting these varieties. इसलिए क्योंकि ये जो है these are like the main source of several of the traits which we would like to introduce in our current day cultivated variety. जैसे Samba Musanam is a indigenous flood tolerant variety. ये आपका काफी ज्यादा पानी हो जाता है तो भी इट विल ग्रो, इसके इंटरनोड जो है वो लॉन्गेट हो जाते हैं, तो ये फ्लड टॉलरेंट वैरायटी है. सिमिलरली नवारा जो है, इसका भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इस राइस की. तो और काफी सारी जो हमारी राइस वैरायटीज हैं, दे आर ऑल लाइक डिजीज या इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं. तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो एग्रीकल्चर में, जैसे अभी कोई हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसमें ऐसा कुछ कोई ऐसी डिजीज आ जाए जो कि आपका यील्ड कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो फिर उसको उस डिजीज के लिए आई मीन लाइक हाउ टू नलिफाई दैट इफेक्ट, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे इंडिजिनस ट्रेजर बॉक्स में, क्योंकि इंडिजिनस वेराइटीज में ही जो है हमें वो जीन्स मिलेंगे या वो प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो कि हेल्प करेंगे हमारे जो करंट मॉडर्न हाइब्रिड वेराइटीज हैं, जिसमें कि वी कैन इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. So indigenous rice varieties are there. This is one example. Another example that I've given here is very like India is again a lot of indigenous technical knowledge is available in India. So ये एक branch bending practice है गुआवा की, जहाँ पे गुआवा की branches को जो है बाहर की तरफ थोड़ा सा bend करते हैं, so that की sunlight जो है वो center में आए, और काफी सारे new shoots emerge from the bent portion which bears profuse flowers, and ज्यादा flowers मतलब ज्यादा आपकी fruit setting हो रही है. So this is an indigenous traditional knowledge, and it has been scientifically proven that why it is happening. तो ये farmers काफी समय से इसको use कर रहे थे, but अब researchers ने इसको prove किया है कि why जो है yield बढ़ती है.
Then one example from textiles. So India में again like हर प्रांत की even हर state में from each of the pockets we have different textiles. लखनऊ का लखनवी चिकन है या बनारसी साड़ी है. तो मैंने आई हैव जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल. आसाम में भी आप मुगा सिल्क आप देख सकते हैं, या जैसे संबलपुरी साड़ी है. तो इट्स लाइक दीज आर ऑल वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड वीविंग. So just one example I'm giving here because it's a 400 year old traditional knowledge of textile crafting. So Kanchipuram silk sari, it's mainly produced in the Kanchipuram region in Tamil Nadu, India, and it is woven from pure mulberry silk, and it has been given a GI tag. मतलब कि like is very specific to Kanchipuram area. So similarly, we have a lot of other traditional textile weaving technology with us. Then shipbuilding also. So one example from shipbuilding, because I know India was a hub, that you might have read in your history books also, that India was a like trade hub. ग्रीस से या पुर्तगाल से फॉरेनर्स आते थे, इवन ब्रिटिशर्स आए, है ना. तो थ्रू सी ट्रेड, थ्रू सी रूट दे वर कमिंग. सो सी ट्रेड वाज थ्राइविंग अ लॉट. तो सी ट्रेड जगह अगर आपको सी में जाना है तो आपको उतने बड़े बड़े जहाज भी बनाने होंगे, बिकॉज सी में काफी लंबे टाइम तक रहना है, उनकी वेव्स को विथस्टैंड करना है. तो Uru tradition is a very thriving tradition in one of the small areas of Kerala, Baipur. और ये last 1500 years से it's thriving, and the Uru ship is basically traditionally crafted by the Khalasis. And the majority of consumers of Uru were Arab merchants. So again, like we need to, and these are like produced from the teak from the Nilambur forest. So again, we need to recognize the importance of this important traditional craft, and which needs protection and conservation. Then some 1 or 2, 3 examples from different fields I'm giving you, like जैसे कच्ची घानी का तेल कहते हैं ना, आजकल क्या रिफाइन नहीं खाना है, कच्ची घानी का तेल खाइए. तो कच्ची घानी इज लाइक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. जब आप कोई केमिकल यूज नहीं करते, कोई हाई हीट यूज नहीं करते, आप बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से तेल निकालते हैं. मस्टर्ड का है, सनफ्लावर का है. तो ये जो है लाइक कोल्ड प्रेस has been a traditional method, and has also been an integral part of Indian system. So this has always been a part. और इसमें जो health benefit इसमें काफी है, न्यूट्रिएंट पैक काफी होता है ये, क्योंकि हम इसमें जो है हाई हीट या कुछ केमिकल्स नहीं यूज करते हैं. तो इससे जो है हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल लॉक्ड रहते हैं. तो so this was a indigenous technique. Then I've also given you one example of Channapatna toys, which is again a small town in Karnataka. तो आजकल बच्चे बिल्कुल गैजेट्स और रोबोट्स और वो ड्राइवरलेस कार्स, वो जो ऐसे वाले टॉयज यूज करते हैं. और आप लोगों को अंदाजा है या नहीं कि ये सारी जो गैजेट्स हैं दे जनरेट लॉट ऑफ ई वेस्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, इन्वायरमेंट को भी काफी पोल्यूट करते हैं. तो हमारा अपना हेरिटेज जो है that we should know about, क्योंकि ये जो है ये वुडन टॉयज होते हैं जो बिल्कुल नॉन टॉक्सिक, बहुत सेफ, बिल्कुल नेचुरल डाइज यूज करके बनाते हैं. और they have all the traditional method of making carving these toys. So again, we should recognize the importance of our traditional toy makers, and the importance to recognize their worth. Then one example from perfumery, जैसे आजकल लोग perfumes use करते हैं, but earlier attars were there. Attar is like इत्र, जो कि आपका natural traditional distillation process से natural ingredients से ना, रोज है या केवड़ा है, उससे बनाते थे. और it has also been like this has also been a traditional method basically. तो traditionally ये काफी like it has thrived. तो अभी ये जो मैं example यहाँ पे I am showing, it's from Kannauj, which is a small town in UP. और काफी लोग यहाँ पर जो है इस एरिया में जो है कन्नौज अत्तर बनाते हैं.
और deg bhakka is the traditional method of distillation that they're using to prepare this athars. तो अब आजकल का जो परफ्यूम्स का जमाना है, तो हमें सोचना है कि हम इन अत्तर जो बनाते हैं उनको हम कैसे जो है उनका लाइवलीहुड सिक्योर कैसे करें, और कैसे, बिकॉज दीज थिंग्स ऑल्सो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इट्स वेरी वेरी अलाइंड विद आवर नेचर ऑल्सो, सस्टेनेबल यूज पर डिपेंड करता है, बिकॉज ये नहीं आपको बताता कि जो है ओवर आप यूज कर दो, आपका जो एनवायरमेंट है उसको भी सस्टेनेबिलिटी उसकी भी मेंटेन करनी है, और लोकल जो भी प्रोड्यूस है उससे ही आपको ये चीजें बनाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वी ऑल लाइक, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि कैसे जो है किन किन एरियाज में वी हैड आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, बट ओवर द टाइम India also witnessed erosion in traditional knowledge. So there are some reasons that I've just listed, which foreign rulers, the multiple, India suffered multiple invasions from foreign rulers, and Britishers basically they established the colonial rule. Then with this, globalization happened, and subsequently, we started to ignore our own traditional knowledge. We were more attracted to the Western culture, and then the lack of proper documentation and effective communication. So क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम जो है माइंडलेस मिमिक्री जिसको बोलते हैं कि माइंडलेस वेस्टर्न कल्चर का हम कर रहे थे, तो हमें हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज का हमने बिल्कुल ध्यान रखा नहीं, तो ये जो है काफी सारा टीके वी हैव लॉस्ट, बट जो बचा है एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। तो so we have learned that yes, we had a glorious legacy of traditional knowledge which we had used over the centuries, but again a lot of misuse and misappropriation have been there on our traditional knowledge. And अभी पेंडेमिक के समय में भी हमने काफी देखा कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल नॉलेज पर भी काफी रैम्पेंट हुआ सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स पे, तो देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेरी pressing need to identify and validate our traditional knowledge and practices and effectively communicate to the society. So considering the importance of conserving our TK and then communicating it to society, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who also happens to be the president of the CSIR Society, so he basically called upon CSIR that CSIR should take up the responsibility to to communicate such traditional knowledge which have scientific basis wherever available. So it should be clarified to the citizens in a very user friendly way. So this particular the responsibility was given to CSIR NISPA, which has a 70 years legacy of science communication. And when I tell you 70 years of legacy of science communication, तो बहुत आप लोगों को बच्चों को बहुतों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और थोड़ा सा तब शायद आपको समझ में आए। काफी बच्चों ने जो है साइंस रिपोर्टर जरूर पढ़ा होगा, विज्ञान प्रगति के बारे में भी जान रहे होंगे या पढ़ा होगा, और साइंस की दुनिया। तो ये जो तीनों पॉपुलर साइंस मैगजीन्स हैं ऑन साइंस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ये तीनों ही जो है हमारे CSIR NISPER से पब्लिश होती हैं। और सम ऑफ यू जो है, और काफी सारे पॉपुलर साइंस बुक्स भी हैं इसके अलावा। एंड देन एंड आई एम श्योर जैसे काफी आप लोग जो है काफी लोग जो है रिसर्च में भी आगे अपना करियर बनाना चाहेंगे। अभी आप लोग 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में हैं, बट यूड लाइक टू परस्यू PhD and then you'd like to publish papers. तो papers जो आपने काम किया है वो आप एक research article publish करते हैं, तो वो you'd also be happy to know that CSIR NISPER publishes 18 peer reviewed indexed journals, and is the only organization which publishes such a large number of journals with good credibility. तो ये तो खैर बात की बात है। तो CSIR NISPER तो हमने ये समझा कि CSIR NISPER को जो है ट्रेडिशनल नॉलेज विद साइंटिफिक बेसिस उसको कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वी टुक अप एज अ मिशन मोड, एंड वी गिव द we took it up as a brand name Swastik, that is scientifically validated societal traditional knowledge, which aims to conserve Indian traditional knowledge and practices, inculcate research and development tempo, verifying tradition in a scientific manner, and instill confidence among the
citizens regarding the scientific value of our ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के अंदर जो है बेसिकली वी आर आइडेंटिफाइंग द ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको हम वैलिडेट करते हैं ऑन डिफरेंट साइंटिफिक पैरामीटर्स, देन वी डॉक्यूमेंट इट एंड देन वी कम्युनिकेट इट. तो जो कम्युनिकेशन जो है, वी आर रनिंग सोशल मीडिया कैंपेन्स ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब through attractive infographics, short audio visuals, podcasts, reels, and we are communicating it in English and different Indian languages. So अभी तक हमने 17 total languages में communicate किया है. And then other than this, we are also, hosting various lectures, webinars, and we have recently partnered with MyGov also. तो ये जो MyGov के साथ जो, okay. Yeah, so so until now, like it's a 1-year-old initiative. So इसमें अभी तक we have communicated 21 verified traditional knowledge in 17 Indian languages, 17 languages including English. So that, and we are trying our best to communicate in all the official languages of India. And as far as the partnership with MyGov is concerned, we have launched really some very good initiatives, very good activities at MyGov portal. So one was a discuss activity, so the deadline is already over, but the Indian quiz on Indian traditional knowledge is currently live, and I'm sure like Arika ma'am ने भी वो link आप लोगों के साथ share किया होगा. तो ये अभी भी live है. आप लोग ने अगर नहीं खेला है तो प्लीज जो है ये क्विज चैलेंज टेकअप करें और अपनी नॉलेज को जांचें Indian traditional knowledge पे. Then again, like last week we have again launched another very exciting contest, which is a photography contest on Indian architectural heritage. So ये अभी November 30th is the deadline for it. तो MyGov से भी हम लोग काफी लोगों तक हम पहुंच पाए, करीब 31 million people we have reached. And तो ये it's all about swastik and about Indian traditional knowledge. और जो take home message which I would like to give from my presentation is like to understand, study, advance and promote our traditional wisdom and our traditional knowledge through the lens of science. आप हर चीज को आंख मूंद करके विश्वास मत करिए, आप अपना जो है लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग लगा करके क्या सही है क्या गलत है वो सोचिए, और देन you will understand the importance of our traditional knowledge. So this is from my side. तो आप like, follow, share, subscribe कर सकते हैं हमें on all the popular social media platforms. And if I hope Arika, we have some time. I've already spoken for last 50 minutes, but मैं स्वस्तिक का वीडियो भी मैं दिखाना चाहती हूँ. We have time. We have time. Yeah. So I'm stopping the sharing, and I'll just play this video from my computer because yeah. Okay. Just I have to share my screen, right? I have to share again. Share screen. Yeah. So yes, so this is one video, and if you will say, I'll have another small videos also. तो मैं play कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, as you say. Yeah.
Ma'am, you can play the video. That is So, okay. okay, so We have some raised hand, which okay. I think some students are trying to connect with you. They have Yeah, some yeah, questions. I can see only 75 raised hands were there. तो Yes. मैंने अभी 17 है, but at one point of time a lot of raised hands were there. Yes, yes. So there are some students who are constantly asking some questions on my chat box as well. Mm-hmm. And let me put forward one, two questions. I mean, I'll ask the students to unmute themselves and they can ask the question directly. So we have with us Rishabh Kumar. You want to ask something? No, ma'am. Your hand was raised. Okay. Sadhna Sahu. No, ma'am. Okay. So I have some question Okay. from Karthik Sriram, and he says that if in the older times they did not have machine, then how did they figure out what is good and what is bad? What is good and what is bad? मशीन नहीं, ये तो जो एक लर्निंग प्रोसेस है. मतलब मैं भी ऐसे नहीं बता सकती हूँ कि मशीन है और आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं कि what is good and what is bad. Like I'm not basically able to figure out your question that way. But this is all you know, the scholars were so you know, great. जब उन्होंने वेदास लिखे, उपनिषद लिखे, तो उस समय वो नॉलेज कितना एडवांस था, मैं वो बताना चाह रही हूँ कि उस समय का नॉलेज, नो हाउ एडवांस्ड इट वाज, कि हमने सर्जरी की भी बुक लिख ली और हम वेदास और जो पूरा जो द होल फिलोसफी ऑफ लाइफ जो है वो हमने मेंशन किया है हमारे वेदास और उपनिषद में और समाज शास्त्रों में. तो दिस वाज देयर. और ऑलमोस्ट हर साइंस सब्जेक्ट की बात करें, एसएमटी डोमेन्स की बात करें, हमारे पास सो मेनी यू नो क्लासिकल टेक्स्ट्स आर अवेलेबल. सो दैट signifies the prowess of our you know scholars of that time. So, ma'am, another question from Abhilasha. You want to ask something? Yes, ma'am, I want to ask. Yes, Abhilasha. Ma'am, why not ancient heritage is not as present heritage? Why ancient heritage is not as present heritage? Because मैंने बताया आपको कि जो ancient जो heritage है वो काफी सेंचुरी से चली आ रही है और कुछ डॉक्यूमेंटेड थे, कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं थे. तो काफी हमने लूज किया, यू नो, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए, ब्रिटिशर्स आए, अपने साथ वो अपना यू नो अपना कल्चर भी लेके आए, अपना एजुकेशन सिस्टम भी लेके आए. मतलब हम, क्योंकि उनको जो है नो इन इंडिया ब्रिटिशर्स को चीप लेबर मिलता था, तो दे वर लाइक कि यू नो वो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को क्यों प्रिजर्व करें. तो उन्होंने वो अपनी चीजों को हमारे ऊपर इम्पोज करा और हम like we were so influenced by western culture, we started ignoring our own traditional knowledge. तो ये इसलिए ये डिफरेंट है, क्योंकि हम जो आज के समय में जो भी देख रहे हैं वो हम वो पढ़ रहे हैं जो अंग्रेज हमें हमारे करिकुलम में जो दे करके गए. ठीक है, तो हमने वो पढ़ा ही नहीं जो हमारे नो स्कॉलर्स लिख करके गए थे. हमें वो पढ़ा ही नहीं, हमें वो नॉलेज ही नहीं है. तो ये इसलिए हमें वो डिफरेंट लगता है. Okay, Abhilasha, anything else you want to ask? No, ma'am, thank you. Welcome. Webvi, you can unmute, beta. मैम एक्चुअली ना मैंने YouTube में और वेबसाइट्स में बहुत सारे देखी है जो बोलती है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 टॉप गॉड्स एक्चुअली में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पार्ट है. जैसे कि ब्रह्मा उसका वो न्यूट्रॉन है और महेश मतलब शंभु वो शिव वो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन वो विष्णु है. तो मैंने देखा है कि हमारी मॉडर्न साइंस है ना ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा एटॉमिक पार्टिकल बिल्कुल अच्छे से सेटअप होता है. तो जब मैं ये बात दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ ना तो दिक्कत ये होती है कि उनका ना माइंडसेट ही ऐसा है कि नहीं ये तो हम लोग ऐसे पहले से सुनते आ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता. लाइक
दिक्कत होती है कन्विंस करने में, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये सब फिक्स्ड हो गया कि ये सब साइंस हो ही नहीं सकता ऐसा, तो कन्विंस कैसे करें ये भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता। नहीं, अभी जैसे आपने जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो बात आप कर रहे हैं, जैसे हमारे पास महर्षि कणाद होते थे, ठीक है, जो महर्षि कणाद ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी दी और ये सारा चीज, लेकिन जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश को आप एज ए ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता रहे हैं, तो मैं भी उसमें आई एम ऑल्सो नॉट कन्विंस्ड दैट वे। तो बेसिकली क्या है कि ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे एक आप ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आदि देवता हैं, ठीक है, तो ये माइथोलॉजी है, हमें सेपरेट करना आना चाहिए माइथोलॉजी को हमारे पारंपरिक ज्ञान से। ट्रेडिशनल नॉलेज इज पारंपरिक ज्ञान, सो पौराणिक ज्ञान एंड पारंपरिक ज्ञान, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पौराणिक जो भी चीजें हैं, जो फिगर्स हैं, ये उस समय ऐसे लिखे गए थे ना, स्टोरी फॉर्म में, श्लोक के फॉर्म में, कविताओं के फॉर्म में, ताकि लोगों तक ना वो चीजें जल्दी जाएं, पद के रूप में, गद्य के रूप में, है ना, ताकि नो ऐसे छोटे छोटे श्लोका या पोइट्री के फॉर्म में, सो दैट कि लोगों को ज्यादा जल्दी चीजें समझ में आए। तो इसलिए बहुत सारे फिगर्स भी स्टोरी में, स्टोरी जैसे एपिक्स है, महाभारत या रामायण, ये दीज आर ऑल स्टोरीज, वो रियल है नहीं है, दीज आर स्टिल नो डिबेटेबल। तो मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगी, बट व्हाट आई विल से इज कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो आज का जो साइंस है, जो आज का पैरामीटर्स है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं। तो हमारा जो आज का जो विज्ञान है और आज के जो साइंटिफिक पैरामीटर्स पर जो हमारा एंशिएंट नॉलेज प्रूव होता है, हम उसी को माने, उसी को समझे, उसी को प्रोपेगेट करें। ओके, सो आई होप, तो इसलिए वैसी चीजों को आप मत किसी के ऊपर थोपिए जो नहीं समझना चाह रहे, मतलब जैसे, या आप नहीं उसको समझा सकते हैं। आप मैं भी नहीं एग्री कर रही हूँ कि आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बट डेफिनेटली आई विल से कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में ऑलरेडी था, महर्षि कणाद ने ऑलरेडी ये सब चीजें बताई हुई है। तो दिस आई विल एग्री, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू like propagate and stand by this. Okay, Ayank, you want to ask something? Yes, ma'am. Yeah, go ahead. Ma'am, you have shown a mirror that is made, that is metal, seen like gold, but if there was not machine, then how it is cut and how the design was given in the ancient times? He's talking about Aranmula metal mirrors. Yes, ma'am. तो क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उस समय अगर मशीन नहीं थे तो डिजाइन कैसे दिया गया? वो हाथ से, इट्स ऑल हैंडक्राफ्टेड, मशीन से नहीं, हाथ से। इतनी मेहनत करते हैं लोग, इसलिए तो हमें उनको इम्पोर्टेंस समझना चाहिए उनकी। पहले मशीन नहीं था, और ये हैंड, बिल्कुल जो यूनिक ट्रेडिशन है, हैंड क्राफ्टेड हैंडेड मिरर्स, हाथ से बिल्कुल बनाते हैं एक एक मेटल मिरर को, ठीक है, इतनी पॉलिश और सब कुछ हाथ से करते हैं, ऑल द डिजाइनिंग, ऑल द कार्विंग, थैंक यू मैम, ऑल द स्मेल्टिंग, जो भी करना है, मतलब ना, सब भट्टी वगैरह सारा अपना ट्रेडिशनल भट्टी यूज करते हैं, और सारे हैंडक्राफ्टेड। जय हिंद मैम। मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। मैम, जो आपने बीच में बताया था प्रेजेंटेशन के बीच में लीलावती बुक के बारे में, लीलावती वाज एंशिएंट स्कॉलर, मैथमेटिशियन, या। तो मैम, उन्होंने अपनी बुक में क्या पाइथागोरस थ्योरम भी लिखा था? क्योंकि मैम मैंने कहीं पढ़ा है ये, तो मैम क्या ये सच है? मैं लीलावती की बुक के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर जो पाइथागोरस थ्योरम है, हमारे पास सुल्ब सूत्राज होते हैं, ठीक है, तो 7 सुल्ब सूत्राज हैं। बेसिकली क्या है कि पहले ऋषि मुनि बहुत होते थे या पूजा पाठ बहुत करते थे, तो जो हवन कुंड का आप देखोगे ना स्ट्रक्चर, जैसे एक बिल्कुल ट्राइंगल या स्क्वायर, एक परफेक्ट ज्योमेट्री की बनती है,
ठीक है, तो ये था। तो जो मेजरमेंट के लिए लाइक दे गेव 7 सुल्ब सूत्र। तो जो बौधायन सुल्ब सूत्र है, जो फर्स्ट सुल्ब सूत्र है, तो उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज देयर। ओके, Yeah. थैंक यू। Sanvi, you can unmute. Ma'am, I have many questions. Okay. Ma'am, I have read many times that a scientist discovered that a new type of seed by merging many seeds. Ma'am, is that really possible to found a new seed? The new Seed. seed. Yes, ma'am. सीड नहीं, Yes, ma'am. आपको पता नहीं है, हमारा अर्थ जो है ना, इट्स अ ट्रेजर हाउस, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हर दिन भी एक नई स्पीसीज ही डिस्कवर होती है, ठीक है। हम अभी तक अपनी अर्थ को भी नहीं जान पाए हैं। तो सीड आप कह रहे हो, मतलब मैं उसको स्पीसीज के टर्म में कहूंगी कि जैसे वाइल्ड लाइफ, माइक्रोब्स है ना, प्लांट्स, तो ऐसे अभी भी अनटैप्ड बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ में, मतलब डिफरेंट हॉटस्पॉट्स आर देयर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो नई नई स्पीसीज तो डिस्कवर होते ही रहते हैं। तो डिस्कवरी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और हम स्टिल वी आर नॉट कॉम्प्रिहेंडेड द एंटायर बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर मदर अर्थ। So we're still discovering new species and learning about them. So scientists are inventing and discovering new species. Yeah. Ma'am, my second question is this: how is the iron pillar is capable that it is not rusting after all it was made so long? हाँ, क्योंकि जो आयरन पिलर जो है वो किस कम्युनिटी ने बनाया या जैसे वो नहीं अभी तक पता, बट हमारे इंडिया में देयर सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज जो रसलेस आयरन बनाने की कला में लाइक दे हैव देयर लीगेसी, है ना। अगारिया का मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगारिया ट्राइब है, दसुराज हैं, और 2-3 ट्राइब्स हैं, लोहार्स हैं। तो ये लोग रसलेस आयरन बनाते हैं। तो अब जो है कुछ स्टडीज हो रही हैं। तो एक रिसेंटली नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में एक पेपर आया है लास्ट ईयर, जिन्होंने की डिटेल स्टडी करी है विद ऑल द टेम्स एंड अदर बहुत हाई थ्रूपुट जो कह रहे हैं आपके पैरामीटर्स को स्टडी करके, लाइक दे हैव एस्टैब्लिश्ड दैट व्हाई द अगारियास जो आयरन बनाते हैं वो रसलेस क्यों होता है। तो वो सेम थ्योरी लाइक आई थिंक वी कैन थिंक फॉर दिस अशोका पिलर ऑल्सो। तो वो मैं एग्जैक्टली वो पूरा मैं आपको प्रोसेस नहीं बता पाऊंगी, बट दिस पेपर हैज ऑलरेडी बीन देयर। अगर किसी को इंटरेस्ट है, मैं वो पेपर का लिंक शेयर कर सकती हूँ। यू कैन गो थ्रू इट एंड रीड। या Thank you, Sanvi. Next, Alok, you want to ask something? Yes, ma'am, I want to ask something. yes. Ma'am, whether the current science is smarter than the previous science, like old buildings is very stronger than the our buildings right now. नहीं, आपने पूछा करंट साइंस इज स्ट्रॉन्गर देन ओल्डर साइंस। मैं तो वाइस वर्सा, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया रामोप्पा टेम्पल का, है ना। वो 13th सेंचुरी में बना, 800 सालों से वो वैसे ही इंटैक्ट है। कितने अर्थक्वेक्स आए वो वैसे ही इंटैक्ट है, ठीक है। आज की डेट के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, आप उसके लिए वो वाउच नहीं कर सकते वैसा जो हमारे एंसेस्टर्स बना के गए 800 साल 1000 साल पहले बना करके गए, है ना। तो और वो आपने ध्यान दिया या नहीं, जैसे मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज के भी नाम बताए, सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी, फ्लोटिंग ब्रिक्स टेक्नोलॉजी, और जो मटेरियल जैसे उन्होंने डॉलराइट यूज करके वो बनाया था, जो हार्डेस्ट रॉक होता है वर्ल्ड में। तो वो नॉलेज उनके पास थी, सो एडवांस्ड। आवर एंसेस्टर्स हैड सच एन एडवांस्ड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सो दैट one should be very proud of and should acknowledge that. तो हम ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, पता नहीं हम आज के जमाने में ऐसा कुछ बनाए कि जो 800 साल तक खड़ा रहे, तो that will be a marvel, but उस समय तो ऐसा बना करके गए सब।
So our old tradition, I would definitely say that was much better than the current. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Anya? Ma'am, actually, I have two questions. Mhm. Ma'am, the first question is that, ma'am, some social teacher, they will make the students see a very backward view of the ancient texts. And ma'am, sometimes like Um, I'm not able to hear you, Anya, properly. make Your voice is fun about it. breaking. Yeah, your voice is breaking. I'm not able to listen to your question properly. I think we've lost the connection. I think Anya has also posted Ma'am, the actually, question. it's in my She has written, often teachers make students see a very backward view of Indian knowledge, saying Okay. that it is all fake. How to explain these wonders so that no one can oppose us and create awareness between young students so that they won't be angry for some weird reason. नहीं, ये चीज है, मैंने बोला कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इज अ सब्जेक्ट व्हिच हैज सीन इग्नोरेंस, यू नो, इट हैज सफर्ड इग्नोरेंस. हमने ये हमारे खुद की फॉल्ट है. और ये चीज जो इम्पोर्टेंस है हमारी अपनी हेरिटेज की, ये रियलाइज बहुत लेट हुई. बट जो भी है, लेट ही सही रियलाइज हुई. और हमने ये इनिशिएटिव ऑलरेडी स्वस्तिक शुरू किया हुआ है. 1 साल से हम ये कर रहे हैं. हम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को विजिट कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके कोई स्टोरी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल गया और हमने कुछ डाल दिया. कि मतलब लाइक महिमा मंडन बहुत है, लाइक एक इमोशनल कनेक्ट इज ऑलवेज देयर विथ योर ट्रेडिशंस, योर ट्रेडिशनल हेरिटेज एंड आर्किटेक्ट नॉलेज, वो है. बट वी आर कीपिंग दैट असाइड. We are properly thorough investigation we ourselves are doing at our end. Our team is really creating content and reviewing it, getting it validated, and several times back and forth communication we do with experts, and then we are presenting this. तो ये जो है स्वस्तिक इज एन इनिशिएटिव. और ये जो है हम जैसे हमने कैंप के साथ भी इसलिए कोलैबोरेट किया ताकि हम बच्चों से भी कनेक्ट कर सके. हम माईगव के साथ हमने किया कि हम जनरल पब्लिक के साथ भी कनेक्ट कर सके, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे हम रिसर्च लैब हैं तो हम रिसर्च कम्युनिटी के साथ तो कर लेते हैं, बट जनरल पब्लिक या बच्चों तक कैसे पहुंचे, तो दैट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. और hopefully in future we'll be conducting more outreach sort of activities. हम schools में personally भी जाकर के मिल सकते हैं, teachers को बता सकते हैं. और ये जो है it should be a collective ownership, I would say, on our traditional knowledge. तो ये किसी एक particular के effort से नहीं होगा. So we all have to take ownership. Absolutely, ma'am. I am getting so many questions now. So one question which actually got my attention was, ma'am, in older times when Aryabhatta discovered zero, then how did and then who did people counted? How did he wanted to write? How did people counted 100 Kauravs? How did नहीं मैं बताऊं. आर्यभट्टा ने भी, ये भी रॉन्ग परसेप्शन कि आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया. ठीक है, ये भी जब हम भी स्वास्तिक से जुड़े, जैसे हमारी टीम जुड़ी, तब हमें भी समझ में आया ये चीज कि आर्यभट्टा ने एक्चुअली जो ये कहते हैं ना आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया जीरो, वो नहीं है. जीरो किसने डिस्कवर किया वो नहीं पता, बट इट वाज डेफिनेटली देयर इन आवर, that is definitely our Indian traditional knowledge. But जो ये हम कह रहे हैं कि आर्यभट्टा ने किया, he had just compiled, जो आर्यभट्टिया है, like he had just compiled all the knowledge. He made a compendium. तो उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने कुछ इन्वेंट किया, वैसा नहीं. किसने किया वो नहीं पता, बट जैसे इन द फॉर्म ऑफ श्लोकास, जो भी हमारा जो नॉलेज चला आ रहा था उस समय भी, उनके भी पहले कितना एडवांस था. You should just understand, in the form of slokas he tried to
put everything, whatever the knowledge was there, he put that in the compendium. So he said, he mentioned about zero, but he didn't discover zero. Ma'am, taking the last question. This is Arya D. Ma'am, can you explain the mystery of the Hampi music pillars? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी. मैं भी इसको भी हम एक स्टोरी टेकअप करेंगे, फिर उसके पीछे की कहानी लेकर के आएंगे. तो म्यूजिक पिलर्स और भी बहुत सारे, जैसे बृहदेश्वरा मंदिर में भी आपके जो है म्यूजिक पिलर्स हैं, वो टैप करते तो म्यूजिक निकलता है. तो ऑब्वियसली बहुत सारा जो है उस समय यू कैन से फिजिक्स, उस समय भी वेव्स और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लोगों को पता थी, और वो उन्होंने उस तरीके के पिलर्स डिजाइन किए थे. बट एग्जैक्ट एंड आई एम आल्सो नॉट अवेयर कि कुछ ऐसा जो है किसी रिसर्च ग्रुप ने कुछ स्टडी करी है या नहीं करी है. सो देखेंगे. So, ma'am, I'm sorry, students, I have to, because we are getting short of time, so we will have to put a pause on the queries, but nevertheless, you can send us the queries, compile the questions, and you can send us on cam.res.in. Please, I will request my team members to send these email ID in the chat box. You can send us the query, and we will forward it to Charu ma'am. Sure. Charu ma'am will be gracious enough to answer all those queries, and we'll post it back to the login, so that every student who is a part of CAM can revisit what are the questions that were asked in this particular session. Before going ahead, ma'am, I would like to really thank you on behalf of CAMP and my fellow campions who have joined us. And it was an excellent session, full of knowledge, full of, things that we were aware of, might have forgotten. We in our time must have learned all these things, but have forgotten. Sometimes we are very, very attracted with the Western culture, but somehow there is so much in our own culture that we don't know. We have to inherit that. We should appreciate the culture that we carry and take it forward to the to the younger generation that we are coming up. So Swastik in itself is doing a wonderful job, and we are so happy to connect and associate with Swastik, and we can have you in this platform, so that we can have this fantastic session that everybody was enjoying, was participating. So thank you so much, ma'am. Yeah. In fact, मैं अगारियास का मैं एक वीडियो दिखा सकती हूँ, अगर if you're saying, and absolutely ma'am, absolutely. I'll just क्योंकि काफी बच्चे जो है वो रेस्टलेस आयरन की के लिए पूछ रहे हैं, तो just it's like less than a minute. Okay, sorry, I have not. Yeah, just a sec. What happened? Yeah, so this is all from my side. मैंने सोचा कि अगारिया का भी दिखा देते.
Absolutely, ma'am. Ma'am, a lot of students are also asking me about that photography contest that That I will share. That I will share. Okay, वो Uh, हमने अपने हमारे so सोशल मीडिया don't पेजेस पे worry, भी we उनको will शेयर send you करेंगे. the messages with the link from where you can go ahead and participate in this contest. It will be available on the camp website, or you can go to the swastik handles at social media as shared by ma'am. Also, we will share the social media handles of swastik on camp Facebook media page and all the other social media pages, so that you can also connect with swastik and you should not miss out any important research and information that swastik is coming up with. So it is very very useful for all of us, and it is very informative for our own knowledge and our taking a culture ahead. So with this, I thank you again, once again, Charu ma'am. A few information that I would like to tell all the students who have joined us is that the next session would be made live on 27th of October. We'll come with the 14th fortnightly sessions on 27th, and 28th is our next Achievers episode. We will be bringing one new face, new achiever. We will be interviewing one fantastic achiever, and with whom you can interact, you can ask the question, you can know the journey of that particular achiever, how he or she has attained so much and achieved so much in their life and has been awarded by the honorable Prime Minister of India. And with that, we also want to hear your feedback so that we can keep improving our content. So please fill the quick workshop feedback form shared in the chat box. The link has been shared. You can like, share, subscribe all our social media channels for latest updates and announcement. We are available on Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, and Twitter. And also all the updates are given on the scam website. You should I urge every student to go log in on your particular platform using your enrollment number and the password. The sample papers of the NASTA 2022 are made live, so you can go ahead and you can start solving those questions, because a lot of queries were coming up that what are the sort of questions that will be asked in the upcoming NASTA exam. So don't worry, it is uploaded, the class wise sample papers are there. You can go ahead and you can test your knowledge on that, and you can prepare yourself. Now is the time for announcing our fortnightly quick challenge. It is the time to post the fortnightly quick challenge. So you will find a quick link in the chat box from where you will go and reach the Google form. There you will have to answer one simple question and fill out some basic details, and like and subscribe our Facebook and other social media handles. One lucky winner from you will be announced at 8 p.m. and will receive one special surprise from our side, from camp side. So we will announce the winner at 8 p.m. The entries for this fortnightly challenge closes at 7 p.m. So it is 5:20 right now, and at 7 we will close the entries. Till then you can submit all the answers, submit the queries, submit all the answers, and we will check the the subscription and the sharing that is done by you, and we will announce one lucky winner at 8 p.m. on our social media handle. So stay tuned and do not miss this opportunity. With this, I would also urge that if you have missed this particular session or any or the other session that has been organized by camp, then do not worry, the recording of this session will be made available to you on your camp login panel. So you just have to log in and go to the Junior Scientist Club option. There you will find the recordings of all the 13 sessions that have been conducted on camp platform, so that you cannot miss them, you can revisit them, you can revise what has been done.
Also, you can get access to interesting podcasts, journals, articles by CSIR, NISPER, and under your student login. You can go there, you can buy, you can reach the website of CSIR NISPER, from where you can take the subscriptions of Vigyan Pragati and Science Reporter and other science popular magazines if you are interested to. So for that, you have to visit our website, that is camp.res.in. With that note, this is a goodbye from my side.